अस्सलाम वालेकुम। आज का ये जो वीडियो है ये एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ये हमने एयरटेक पे मेरे कोलीग हैं पीटर लिख्टहार्ट और मैं जिन कंपनियों को हम ट्रेन कर रहे थे उनमें से एक कंपनी को सिलेक्ट करके हमने कुछ सवाल जवाब किए हैं, जिसको मैं वीडियो कर रहा था और पीटर सवाल पूछ रहा था। तो ये सवाल इसलिए पूछे गए हैं कि हमारे जो बाकी साथी हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकें कि एक्सपोर्ट का जो प्रोसेस है उसमें क्या क्या स्टेप्स हैं। बहुत से लोग नुमाइश पे तो चले जाते हैं और उस पर ख़र्चा भी कर देते हैं, टाइम भी लगाते हैं, लेकिन उसमें से उनको नताइज हासिल नहीं होते और फिर कहते हैं जी हमें कुछ मिला नहीं है इसमें से। ये पूरा एक प्रोसेस है एक्सपोर्टिंग का, और इसमें हमारे जो एक्सपोर्टर्स होते हैं उनको इस प्रोसेस का समझना बड़ा लाजमी है कि कैसे शुरू किया जाता है और कैसे दरमियान में ये एक्सपोर्ट मार्केटिंग के स्टेप्स क्या क्या हैं, जब तक कि आप कस्टमर का एक ऑर्डर लेके नहीं आ जाते। तो ये जैसे हम अब आगे चलेंगे तो ये सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा और इसमें आपको कुछ चीज़ें हासिल होंगी जो कि आपको एक्सपोर्ट में उसमें से फ़ायदा होगा आपको। आइए आगे चलते हैं। Hello, this is CBI broadcasting from the Frankfurt Airtech Supply Fair to the Aerospace, a high demanding aerospace fair. And I have today a meeting with Mr. Nadim from Alson's group. Mr. Nadim, Yes. how did you prepare for this fair? Well, we started 6 months ago, Okay. and we started with the specific brochures for this fair, Okay. as under the guidance of CBI, Yeah. and then focusing on the aerospace parts for the brochure and all the technologies available with us. So, And in addition, we also prepared the newsletter. This newsletter. okay. Can I have a look? Yeah. It's showing the latest development in our company Okay, so you're and all the informed. activities, past fairs, participation. So you all that. okay? So you inform the customer before you start. Yes. Okay. Yeah. But what is interest about aerospace market for your company? See, interest is we are already in the our niche market is precision machining. Yeah. We are not only selling components. More than that. Okay. I mean, we have multi-technology cluster at our industry. Okay. We have machining, we have milling, and we have electroplating, So you heat treatment. Yeah. So it's one window solution for our Okay, customers. so yeah, you don't supply a part, but you Yeah, get a complete package of solutions. complete package. I mean, talk about this part. Let me show you. This is the part. We started with this part. Yeah. Now we are going for the assembly. Okay. So for this assembly, they have to go to 6 or 7 suppliers. Okay. So Now it's a, Alson's is supplying them as a single window. Now they don't have to hassle with 6 or 7 suppliers. you seem to enjoy your work. Yeah. Okay. But what can let's say company provide buyers, and how do buyers have the let's say the interest in your company? How do you find the buyers? See, find the buyers, especially talking about this Airtech exhibition. They provided us the website, Okay. so we can have a B2B meeting, and that B2B meeting is very much focused. I mean, they know us very well, we know them very well. And if you finalize this B2B meetings, how are you going to organize the follow-up? See, follow up, we will send them the email Yeah. first, and we'll prepare the special newsletter. Yeah. And we already made some arrangement for the follow-up meetings. 3 to 4 of our potential client or contacts, we have already arranged the meeting in coming months. Seems you're getting a lot of success here Yeah, with your yes. enthusiasm.
Yeah. Okay, we greet you from the Airtech Supply Fair from Frankfurt. Thank you for your interest in CBI. आपने ये देखा कि इस सवाल जवाब के दौरान नुमाइश के क्या क्या स्टेप्स हैं। पीटर ने हमारे नदीम साहब से क्या क्या सवाल पूछे कि उन्होंने नुमाइश से पहले आपने देखा कि कैसे 6 महीने पहले तैयारी स्टार्ट की और उसके बाद उन्होंने किस तरीके से उसके फ्लायर्स तैयार किए, उसके न्यूज़ लेटर्स किए, फिर लोगों को बताना शुरू किया कि हम प्लान नुमाइश पे आ रहे हैं। और फिर जैसे नुमाइश करीब आती गई उसके रिमाइंडर्स भी उन्होंने दिए और उसके साथ B2B मीटिंग भी सेटअप की कि हम प्लान नुमाइश पे आ रहे हैं, आप आ रहे हैं तो किस टाइम पे हमें मिलेंगे, ताकि अपने वक्त भी बुक किए वहाँ पे, ताकि नुमाइश के गिनती के 2 या 3 दिन होते हैं और उसमें अगर प्रॉपरली अपने टाइम को यूटिलाइज नहीं किया तो फिर तो वो सारा टाइम ज़ाया हो गया। वो थोड़ा सा बर्फ़ की तरह है कि वो पिघलती जा रही है। वर्किंग आवर्स 6 या 7 घंटे 8 घंटे वहाँ के हैं, उसके दौरान क्या किया जा सकता है। तो वो तैयारी बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर नुमाइश के दौरान आपने देखा कि क्या किया गया और नुमाइश के बाद जो B2B मीटिंग सेटअप की गई वो कैसे की गई, फिर कस्टमर्स को विज़िट कैसे किया गया। ये सारे स्टेप्स हैं और हम आपको इसके ऊपर और भी दे सकते हैं, इस इंफॉर्मेशन भी, और आपकी ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। और आप मेरी वेबसाइट है irastgar.com जिस पे आपको काफ़ी ऐसा मवाद भी मिलेगा जिससे आपको काफ़ी गाइडेंस हो सकती है एक्सपोर्टिंग में। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को और इस पे लाइक का बटन भी दबाएं। बहुत शुक्रिया।